Present. Mani Sri Ravichandra Vaddi Raju. Thank you, sir. Thank you, sir. This Bankers Book Evidence Bill 2026. Sir, today I am going to speak about bill, sir. I am supporting this bill. Banking has changed a lot in recent years. Today, most banking work is done through computers and digital systems, sir. Bank keep important information in electronic form, such as bank statements, transaction details, and others, sir. This Banker Book Evidence Bill 2026 aimed to update the old law related to bank records, sir. The old law was made in 1891 when banking was mainly based on paper records. This bill is designed to recognize modern electronic bank records in legal proceedings, sir. Sir, this is important because digital records are now normal part of our daily banking. If a bank record is needed in a court case, sir, electronic records can help provide information quickly and easily, sir. So this bill can also reduce paperwork and save time. It can make the legal process more convenient and suitable for today's digital banking system, sir. However, digital records must be kept safe, and banks should protect customer information from hacking, fraud, and other unauthorized access, sir. The accuracy and security of these records are very important, sir. In conclusion, sir, this Bankers Book Evidence Bill 2026 is an important step towards modernizing our banking and legal systems. It helps our laws keep pace with new technology, sir. Modern banking needs modern laws and strong security and public trust, sir. We are supporting this bill, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Vaddi Raju ji, Sri Vaddi Raju ji. Mani Dr. V. Shivadasan, not present. Mani Sri L.K. Sudhis. Thank you, Honorable Deputy Chairman. On behalf of Desiya Murpogu Dravida Kalagam, I rise to speak on the Bankers Book Evidence Bill 2026. Sir, the original Bankers Book Evidence Act was 1891. At the time, banking was largely paper-based. Today, in 2026, banking has transformed. We have UPI, IPMS, NEFT, RTGS, mobile banking, internet banking, and core banking solution. Crore of transaction happen digitally every day. But there is a lot of fraud happening every day. That should be controlled, taken action. Therefore, I support the consideration and passing the Bankers Book Evidence Bill 2026. I hope this will bring greater efficiency, transferability, and speed in our legal and financial system. Thank you, sir. Sir, that in Tamil Nadu there is a issue, Kaveri and No, sir, Nadu. it will not go on the record. We are not discussing this issue. You know the rules, Sudhis ji. Thank you. Srimati Mamta Thakur, not present. Mani Dr. M. Dhanpal, Honorable Dr. M. Dhanpal. Thank you, sir. Sir, I support the Bankers Books Evidence Bill 2026 on behalf of all the Andhra Pradesh and Telangana and my beloved leader, former Chief Minister Edapadi K. Padichami. Sir, I welcome the provisions ensuring admissibility of electronic records and safeguards against unauthorized alteration, tampering, and cyber threats. I give some suggestions for this bill, sir. 1. Customer privacy should be protected through appropriate redaction and restricted access to unrelated financial information. 2nd, standard electronic formats should be developed for producing banking records before courts. 3rd, sir, the government may provide greater clarity regarding fintech and other financial sector entities that may be brought under the Act. Sir, these suggestions would make the legislation more secure, consistent, and future ready. I support the bill and urge the Honorable Minister to consider the 3 constructive suggestions, sir. Thank you, sir. Thank you. Manya Dr. Jyoti Nagnath Bagmare.
Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to express my views on Bankers Books Evidence Bill 2026. On behalf of my party Shiv Sena, sir, I rise here today to support the bill. So today the House is going to witness the historical moment, the end of 135 years old colonial British rule and the beginning of new revolutionary changes which make our country future ready. Sir, on behalf of our leader, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde ji, who is the torchbearer of women empowerment and started a very important scheme like Ladki Bahin and gifted the financial freedom to the women, I would like to congratulate Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. Sir, I think she is giving a very strong message of women liberation and women empowerment, not only to the country but to the entire nation. And I think, sir, she proved that चूल्हे चौके की चौखट से निकलकर नया इतिहास रचाती है। चूल्हे चौके की चौखट से निकलकर नया इतिहास रचाती है। भारत की नारी आज सिर्फ घर ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चलाती है। मजबूत इरादे, अदम्य साहस, बुलंदियों को छूता मान है। मजबूत इरादे, बुलंद साहस, बुलंदियों को छूता मान है। अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक नारी शक्ति ही देश की शान है। Sir, I think this bill also reflects the larger vision of our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. Sir, I think the technology had changed the way India banks, and this bill changes the way India proves. Sir, this is the real significance of this legislation. Sir, this bill is a bridge from 1891 to 2026, from paper to digital, from colonial era banking to future ready banking, and from digital transactions to digital justice. So let us not look at this merely as a replacement of an old rule. Let us see it as a statement of confidence in new India, and India that is digital, dynamic and ready for the future. With these words, I extend my full support to the bill, sir. Jai Shivraj, Jai Bhim, Jai Maharashtra. Thank you. माननीय श्री संतोष कुमार पे, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री शंभू सन पटेल जी। आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय। आपने मुझे द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पर बोलने का अवसर दिया है महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। देश की आर्थिक सुरक्षा और सशक्त बैंकिंग व्यवस्था केवल पुराने कागजों से नहीं बल्कि आधुनिक और अभेद्य डिजिटल कानूनों से बनती है। यह विधेयक अंग्रेजों के जमाने के 135 साल पुराने कानून से देश को मुक्ति दिलाकर डिजिटल इंडिया को कानूनी सुरक्षा चक्र देने का ऐतिहासिक काम करेगा। महोदय, हमारी केंद्र की भाजपा और एनडीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र के लोगों के विकास के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महोदय, केंद्र सरकार विकास की गति को बनाए रखने के लिए देश के व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, देश के नागरिकों की सुविधा के लिए अंग्रेज के जमाने के 1500 से अधिक कानूनों को हमारे सरकार ने या तो निरस्त किया है या उसमें बदलाव किया है महोदय। उसी की एक कड़ी में आज जो है ये बैंकर्स बिल जो है यह हमारी सरकार इस सदन में लेके आई है महोदय। इस बिल के आ जाने के बाद जो 135 साल पुराना कानून था बैंकर्स बिल का, वो आज निरस्त हो जाएगा महोदय। आज आजाद भारत का आजाद बैंकर्स के लिए आजाद बिल हम लोग को मिलेगा महोदय। वर्तमान विधेयक बैंकर्स बुक की परिभाषा को विस्तार करते हुए बैंक के द्वारा सभी प्रकार के एविडेंस को इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, वर्चुअल एंड क्लाउड आधारित एविडेंस के साथ साथ बैकअप एवं डिजास्टर रिकवरी केंद्र में सुरक्षित रखे गए एविडेंस भी शामिल है महोदय। आज के एआई के जमाने में जहां पूरी दुनिया बैंकिंग सिस्टम जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है महोदय, और भारत आज यूपीआई, एनईएफटी और ये निफ्ट में और आरटीजीएस में रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है महोदय। वही आज नए बिल की भारत के आजाद देश के कानून के लिए यह बिल आवश्यक था महोदय। और इस बिल को आ जाने के बाद जो पहले जो सिर्फ बही खाता लेके हमारे बैंक के अधिकारी को अदालत का चक्कर लगाना पड़ता था महोदय, अब जो है आप डिजिटली जो है सारे एविडेंस को अदालत में रखा जा सकेगा महोदय। और जो दो कंपनियों के बीच में कभी कभी जो झगड़ा हो जाता था महोदय, उसमें एक पार्टी जो है किसी का पूरा बही खाता
को अपने एविडेंस के रूप में मंगा लेता था, जिसके कारण उस कंपनी का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका डिस्क्लोज रहता था महोदय। अब बेवजह जो अदालत जो है बैंक के अधिकारियों को या बैंक जो या किसी कंपनी को या दो कंपनियों के झगड़ा में बैंकर्स को इन्वॉल्व करने के पहले उसको ऑफिशियली जो है उनको इन्फॉर्म करेंगे महोदय, और जरूरत होगा तभी बैंकर्स जो है उस बिल के ये एविडेंस को लेकर अदालत में जाएंगे महोदय। ये बिल तो बहुत महोदय 30 सेकेंड और बोल दूं महोदय। महोदय आज के इस मतलब 75 अब 80 साल आजादी को होने जा रहा है महोदय, और इस 80 साल के आजाद जो हम वर्ष मनाएंगे महोदय, और इस बैंकिंग जो एविडेंस बिल है इसके पहले मात्र 2000 ईस्वी में जब हमारे जो पुराने जो हमारे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया था महोदय। अब समय आपने बहुत कम दिया है महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं महोदय, धन्यवाद। माननीय शंभू जी पार्टी समय देती है, हमने तो अतिरिक्त दिया और बैठे। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। So thank you very much, sir. So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates. So you may remember, sir, Honorable Prime Minister, speaking from the Red Fort, had very clearly called for change in the mindset that is so required. He spoke about the Panch Pran, and one of the things that he had highlighted was get over the colonial mindset. So in keeping with that, I recall our senior member, Arun Singh Ji, also spoke about the number of laws that have been changed, number of regulations which have been simplified, and that helps in ease of doing business. But keeping in line with the Honorable Prime Minister's advice that all the colonial laws which were written for the subjects of the Queen or the King will have to now be changed so that we give ourselves a citizen-centric facilitating act rather than one for the subjects of a royalty or the imperial force. So in that light, when we looked at the Bankers' Books Evidence Bill, it is 1891 of origin. So also the way in which it had included instruments related to banking which were relevant for that period, which were largely paper-based. Whereas India has shown exemplary speed in digitizing its economy. So the instruments with which you are able to do your banking activities, your financial transactions, have all now become so phone-driven. Each customer or each bank business holder is in a position to do everything that they want to do with a simple button pressing in the phone itself. So the related aspects of doing business through a bank, commercial operations, also will have to catch up with that kind of a digitization in the financial inclusion area, financial sector. Therefore, the Bankers' Books Evidence Act in 1891, which was a legislation which was paper-based, as I said, and everything depended on certified copies of bank records as evidence in legal proceedings. So if somebody had a problem transacting money from one account to another and there was a legal dispute, the bank is not a party, but even then the bankers are called to appear before the court.
or the bankers are asked to appear before the court with papers of the original transaction and so on, which also has a problem of privacy. However, at that time in 1891, this was used for legal proceedings also. But with the advent of digital and electronic record keeping, there was a necessity for bankers to be given the power to say, why not the certified copies in the courts rather than get the electronic records, which is sheer impossible. You're carrying a system, even the system which can come on your phone is not accepted as otherwise based on the 1891 Act. Therefore, the Bankers Book Evidence Act 2026, Evidence Bill 2026 is being brought before this House. We seek to repeal and replace the Bankers Book Evidence Act of 1891. Just for a moment, sir, to say, is this allowed by law? Yes, it is allowed by law, because entry 45 in the Union list, which is the list 1 of the 7th schedule to the Constitution, empowers the Parliament to repeal and re-enact an act. We are invoking that and repealing the 1891 Act and bringing in the Bankers Evidence Bill, Bankers Books Evidence Bill of 2026, which will replace the repealed 1891 Act. So the bill, among various other things that it wants to do, provides for provides for a technology neutral legal framework for bankers' books. It recognizes electronic and digital banking records. It standardizes the certification process, facilitates the admissibility of electronic banking records. It permits authentication through manual, digital, and electronic signatures. It also, therefore, strengthens the statutory protection available to the bank officers where the bank is not a party to the proceedings by requiring the court to record the existence of a special clause, which is the feature in this new one. It suggests to the court to record the existence of a special clause before summoning them, or invoke a cause which is specialized for summoning them, empowers the central government to extend the applicability of the Act to specified financial sector entities, and also aligns the law with the contemporary banking practices. Sir, this particular Act has about 16 clauses which provides for several specific provisions, all of which will allow for the digital records to be in the form of a certified copy, which can be admitted in the court of law. I highlight a few things. Explicit legal recognition is going to be provided if this House passes this passes this bill as an act. So explicit legal recognition of electronic records. So this provides, this particular clause provides that electronic or digital records of bankers' books shall be admissible, it shall be valid and legally enforceable as evidence, subject to the conditions specified under the Act. So clauses 6 and 7 relate to that. Expanded definition of bankers' books is being brought in now. It expands the definition of bankers' books to include records maintained in written or physical form, or stored in electronic or digital form, or otherwise, either on-site or at off-site or virtual or cloud location, including backup or disaster recovery site. So that is the clause 2(1)(b), which we are bringing in now. Conditions for admissibility of electronic or digital records prescribes this Act will prescribe, once passed, the conditions to be satisfied for the admissibility, validity, enforceability of electronic and digital records of bankers' books as evidence, with an enabling provision for the central government to notify such other conditions.
Standardized certificates can also be prescribed. So this act prescribes separate certificate formats for certified copies of bankers' books maintained in written or physical form or in electronic or digital form as specified in the first schedule and the second schedule respectively. So again, the central government may by notification modify the certificates and specify in the rules. This is clause 3 and clause 12 read with the first schedule and the second schedule of the act, sir. So this act also will define the expression special cause, which I mentioned when I opened up the remarks. The special cause will be a part of this bill if passed as an act. It will give the basis for summoning a bank officer to produce bankers' books or appear as a witness in legal proceedings to which the bank is not a party. There can be a case where two people are fighting, commercial case, the bank is not even a party. Today they are all being asked to come and stand before the court, which is their duty, they will do it. But is there a reason why they should be called in a dispute which is not involving the bank at all? So we are now giving a clause through which a special cause can be invoked by the courts, whereupon they can ask the bank to come and appear, even if it's not a party. And therefore, the evidence and everything, even if they're electronic, can be taken and that can be made applicable. Sir, so the special cause can be invoked. I also, in this context, understand, and also the points which I mentioned a bit earlier, appreciate the point made by Sri Niranjan Reddy of the YSRCP about can there be a committee which therefore authorizes instead of the, every time the government having to come to the parliament. Whilst I appreciate the point made, more than the ease which provides it for the government will not hesitate to come before the House to seek their approval and be accountable to the House. So the point which you have made is well taken, Honourable Member, but I would like to assure that the government will be happy to come and stand before the House to explain. So I think, sir, largely every member has spoken understanding the importance of this act, which is being brought in this context. I particularly thank Sri Rajendra Jain of the NCP, who appreciated the digitization efforts which are being undertaken, and therefore an act of this nature is important, and also for his extending his party's support. Similarly, Sri Vaddiraju Garu from the BRS for supporting this bill. I also thank DMDK's member Sudesh also extending the support, and Shiv Sena's Jyoti Vagmareji for also extending her support for this bill. I particularly thank senior member Sri Thambiduraiji for taking this whole thing in a very positive context to see the importance of such amendments which are continuously being undertaken by our government. So I thank Sri Thambiduraiji, particularly when he speaks about the cyber security related aspects, and TDP's Bhashyam Ramakrishna ji, who's a new member, but who has spoken about the importance of digital amendments which are coming through. So there is just one point which I want to highlight. Member Dhanapal of AIADMK seeks clarification on clause 4 to extend the provision to other financial sector entities. So the banking and financial sector has evolved significantly in this country over the past few decades, with the emergence of NBFCs, payment aggregators, fintech companies and other service providers having a pan-India presence. These entities perform an important role, sir, in fulfilling the banking and financial needs of the common people. So it is therefore necessary that whenever and wherever required, they are provided a similar evidential framework. This, therefore, clause 4 enables the central government to act and to extend the act to other regulated financial entities through notification
ensuring that uniform evidentiary framework across all the financial sector is available. So, Shri Manas Ranjan ji from BJD also spoke of data security, privacy to be given highest priority, also spoke about authenticity of electronic records for courts, and that we should strengthen public confidence. So the bill permits banking records to be produced either in physical or electronic form, as the case may be. So that is already being enabled through this new bill which is coming. The bill actually strengthens public confidence by providing a clear, secure and transparent legal framework for the use of banking records in legal proceedings, while fully safeguarding the privacy and the confidentiality of customers. So largely, I think I've addressed most of the concerns of members. In case I've missed out on anything, I'm sorry, I can always meet them in person and talk about it. So I'm grateful that you've given me an opportunity to reply for the debate. Honorable members, the question is that the Bankers Books Evidence Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Number 6 by Dr. V. Shivadasan. Dr. V. Shivadasan, not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are two amendments. Number 1 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? No, sir. Moving? No. Not moving. I understand that, yeah. Not moving. Dr. V. Sivadasan. Number 7 by Dr. V. Sivadasan. Not present. Amendments? Not moved. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There is one amendment. Number 8 by Dr. V. Shivadasan. Not present. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There are two amendments. Number 2 by Sriman A. Rahim. Not present. Number 9 by Dr. V. Shivadasan. Not present. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted. Clause 8 stands part of the bill. There is one amendment. Number 3 by Sriman A. Rahim. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment. Number 10 by Dr. V. Shivadasan. Not present. Amendment not moved. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted.
Clause 11 stands part of the bill. There is one amendment, number 4 by Shriman A. Rahim, not present, amendment not moved. I shall now put clause 11 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 11 is adopted. Insertion of new clause 1A. There is one amendment, 11A. Insertion of new clause 11A. There is one amendment for insertion of new clause 11A. Number 5 by Shriman A. Rahim, not present, amendment not moved. Clauses 12 to 16, the first schedule and the second schedule stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 12 to 16, the first schedule and the second schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharamanji to move that the bill be passed. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Honorable members, now next business, a statutory resolution and the taxation and other laws amendment bill 2026. Dr. John Britas to move the following resolution, that this House disapproves of the income tax amendment ordinance 2026 number 2 of 2026 promulgated by the President on 5/6/2026. Please move the resolution. Sir, this House disapproves of the income tax amendment ordinance 2026 number 2 of 2026 promulgated by the President on 5th June 2026. Sir, my motion is on the premise that they promulgated the ordinance on 5th June and there was a retrospective effect from 1st April. The Parliament was to start functioning from 28th, the monsoon session. There was no hurry at all. And their intention was that those investors who have gone away from India would come back if they are given that much of dividends, in the sense tax exemption. That means what all they contemplated as part of their budget utterly failed. And they thought that by bringing an ordinance, they can arrest the situation. And moreover, the minister has said that evolving geopolitical developments and also to attract stable foreign investors. So the government has to admit on the floor of the House, they have miserably failed. Sir, I have 3-4 minutes, please. Now, what they have done, see, actually they have taken the Parliament and the nation for a ride. Now, in order to convert this ordinance into a law, they have brought a bill that is encompassing many other aspects which were not part of the ordinance. One of the cardinal things which they have actually brought in as part of the bill is that taxing the people in the form of UPI. Those who are using UPI, there is a merchant discount rate that is going to be imposed. And the minister has been trying to explain that, no, this is not for those people who are part of the UPI. 54 crore people are part of these UPIs. Sir, you and me were asked to go to be part of the digital empire. Demonetization happened. They have. Sir, be brief. It's my right. Brief. I will be brief. Yes, you are right. Yeah. You are right. I agree. Be brief. And they wanted all the people to be part of the digital currency system. And after we all went voluntarily as part of the UPI, now they say that they are going to bring in MDR. The minister, very conveniently, she is charming enough to, at least convince a section. I'm talking about you, madam, positively. Now she says that, look, this burden is going to be only for the merchants. Can she explain
Is there any burden that has been imposed on merchant, not passed on to the consumers? Anywhere in the world? Thank you. Anywhere Thank in the you. world. So no, sir. Please, Now, please. sir, now you know what is the volume. You have to be brief. Sir, You have right, but I know but sir, please understand, I have a right. Yes. There is a precedent of giving 5 to 7 minutes. Please give me 3 minutes. Sir, Please. you know what is the volume? Per annum, 340 lakh crore is part of this UPI system. Means huge amount. Like to America is part of this UPI. You will get again opportunity. Sir, no, sir, please understand. Yes, sir. Please be brief now. Please don't give me that opportunity. Let me use this opportunity. Now, see, what did the Prime Minister say in G23? The Honorable Prime Minister said, we will not impose any charge on this UPI system. This UPI system, this will not be a burden for the people. Now, indirectly, the minister want to impose a tax on the hapless people who went to part of this digital empire. Thank you, Janataji. Sir, please. Thank you. No, you already taken 2 points more. Be brief. I am brief. Move further. I am brief. Sir, move further. now the Reuters estimated that transaction about 2,000 rupees account to around 4% of the merchant payment volume. But, sir, that means 67% of the value. So a 2,000 threshold which she is talking about sounds narrow, but it can still bring lot of money, means mystery to the people. Sir, I am brief. Sir, there are honorable petroleum ministries here. I need to, involve him also. There are 1 lakh petrol pumps in this country. If we add the private pumps, 1,25,000 petrol pumps in this country. Imagine that 2,000 rupees additional burden is for a petrol pump owner per day. Just, you know what is impact? 10,000 to 12,000 crore annually for the consumers. Thank you. Now you have moved. Sir, you have moved already. Very important. I am moving. Yes. So I feel that the Honorable Finance Minister is putting a huge burden on this country, and there is no way the Parliament should give a blanket approval to her. If she is interested, let she come with the clauses. You have made your point out. What is the charge for this category? Instead of taking a blanket approval, this is against the people. Resolution moved. It's moved. Yes. Moved. Resolution moved. I have moved the resolution, sir. Okay. Srimati Nirmala Sitharaman ji, to move a motion for consideration of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Please. Sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 2026 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. आप बोलना चाहेंगे इस विषय or later on? So later on will be better. So motion moved. Honorable members, the statutory resolution and motion for consideration of the bills are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Please, no cross talking. John Pitaji, please. Mani Sriman Samirul Islam. No cross talking. Talk. Sriman Samirul Islam, not Sriman Tarun Chug. माननीय सभापति जी, मैं इस बिल की सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ हूं। जो राष्ट्र समय की चुनौतियों को पहचानकर अपनी नीतियों को समय के साथ आगे बढ़ाता है, वही राष्ट्र आने वाले कल की दिशा तय करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी ने जो बिल पेश किया है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की खुशबू आ रही है। ये विधेयक भारत को आगे बढ़ाने वाला, ये विधेयक, ये बिल
ग्लोबल से लेकर लोकल तक हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने वाला, चाहे वैश्विक मंच हो, भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो, हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत करने की बात हो, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं। इस विधेयक के पीछे एक बहुत व्यापक और दूरदर्शी सोच है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई जाए, निवेशकों का भरोसा कायम हो, उद्योग, व्यापार और रोजगार को आवश्यक स्थिरता दे, भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर एक कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार करना। माननीय सभापति जी, मैं आज जो दुनिया के अंदर इस समय जो परिस्थितियां हैं, उसके अंदर ये केवल सरकार के लिए एक राजस्व जुटाने का माध्यम नहीं है, इसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को स्थिरता और आवश्यक समर्थन भी देना होगा। मुझे लगता है इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज की बदलती हुई परिस्थिति को समझते हुए टारगेटेड टैक्स एग्जम्पशन, रैशनलाइज कंडीशंस का रास्ता अपनाया गया है। माननीय सभापति जी, ये वह सोच है जिसे हम पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आर्थिक नीतियों में लगातार देखते आ रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि आज भारत 7.8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है, और आज मेरा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। इसके माध्यम से जहां प्रोग्रेसिव अप्रोच होगी, पॉलिसीज में स्टेबिलिटी आएगी, ये एक भारत को आगे बढ़ाने वाला एक माइलस्टोन साबित होगा। ये बिल केवल एक टैक्स अमेंडमेंट्स नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थिति के बीच भारत की इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक कंपटीशन को मजबूत करने का बहुत बड़ा प्रयास है। ग्लोबल ट्रेड अविरोध और सप्लाई चेन अनिश्चितता के बीच स्टेबल, मजबूत और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली टैक्स रेजिम देना, ये आज की देश की जरूरत है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और टैक्स में निश्चितता, रणनीतिक निवेश और बढ़े और देश आगे तरक्की करे। फाइनेंशियल एक्ट 2026 के बाद स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक को शामिल करते हुए टैक्सेशन फ्रेमवर्क को और रैशनलाइज और सिंप्लीफाई किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, भारत केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल सप्लाई चेन तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में भारत लॉन्ग टर्म टैक्स निश्चितता और रणनीतिक जरूरत दोनों ही देश के लिए आगे बढ़ाना है। फॉरेन कंपनी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को दिए जाने वाले कैपिटल गुड्स को और उसकी टूलिंग पर टैक्स एग्जम्पशन को 2030-31 से 2040-41 तक बढ़ाना, मैं समझता हूं ये एक दूरगामी कदम है। मैं वित्त मंत्री जी को इसकी बधाई देता हूं कि देश को तरक्की के लिए उन्होंने एक बड़ा रास्ता खोला है। इससे भारत का व्यापार, भारत का उद्योग, भारत का रोजगार तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के माध्यम से देश की तरक्की का रास्ता खुलेगा। ये एक इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम व्यापक होगा। मेरा सभापति जी, आपके माध्यम से मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं कि डाटा सेंटर और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से, आज डिजिटल इकोनॉमी आज की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। इसलिए डाटा सेंटर्स के लिए टैक्स फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल और आज का बिजनेस फ्रेंडली बनाना, ये देश की जरूरत है, जिसकी चिंता यहां की गई है। एलिजिबल फॉरेन कंपनी को डाटा सेंटर सर्विस प्रोड्यूस के लिए और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट हटाई गई, मैं समझता हूं ये एक लाल लतीफाशाही से जहां वित्त मंत्री जी ने निकालने का प्रयास किया है, वहीं ये भारत की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कदम बनने वाला है। इंडियन कंपनीज द्वारा लीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑपरेटेड डाटा सेंटर्स को फ्रेमवर्क में अकोमोडेट किया गया है। इससे कंप्लायंस बर्डन कम होगा और डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। FIIC को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेना
और उसके इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। इससे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इससे बॉन्ड मार्केट को डीपन और इंडिया को कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम मजबूत होगा। भारत का इकोसिस्टम इससे बहुत ज्यादा मजबूत होगा। बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी इस फ्रेमवर्क से एग्जम्पशन दिया गया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम है। रफ डायमंड के माइनिंग, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, एक्विजिशन और ऑक्शन के जुड़ी एलिजिबल फॉरेन कंपनियों को नोटिफाई स्पेशल जोन में टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है। ये एक भारत का जो हीरा उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस एग्जम्पशन को अब 31 मार्च 2041 तक बढ़ाकर भारत के वित्त मंत्री जी ने देश की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको विश्व की डायमंड इंडस्ट्री में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे निश्चित रूप से भारत ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेडिंग हब बनेगा और मेरा भारत जो इस हीरे की मार्केट का हीरा बनकर सामने आएगा। सेटलमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स में नोटिफाई करने की पावर को इनकम टैक्स एक्ट की स्पेसिफिक प्रोविजन से डीलिंक किया गया है। इसका उद्देश्य आउटडेटेड स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस को हटाना और फ्यूचर पेमेंट टेक्नोलॉजी के ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। डिजिटल पेमेंट लगातार इन्वॉल्व हो रही है, कानून को भी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। सभापति जी, ये बिल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों बिंदुओं को मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एक स्ट्रेंथन भी करेगा और एक बड़े पिलर के रूप में काम भी करेगा। टैक्स पॉलिसी को केवल रेवेन्यू कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट ना मानकर इकोनॉमिक ग्रोथ और आज की दुनिया के अंदर भारत को किस तरह आगे बढ़ना है उसकी ओर जोड़ना, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक फैसला है। लॉन्ग टर्म एग्जम्पशन इंसेंटिव का उद्देश्य टारगेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आज समस्याओं से नहीं समाधान की ओर बढ़ रहा है, समाधान से अवसरों की ओर बढ़ रहा है और अवसरों से विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का संकल्प अब केवल सरकार का संकल्प नहीं है, यह संकल्प अब केवल किसी नेता का संकल्प नहीं है, यह आज संकल्प पूरे भारत का संकल्प बना है। आज 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत 2047 के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर देश का युवा उस 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को अपना विजन मानकर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई भी चुनौती हमें विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। विकसित भारत 2047 केवल लक्ष्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई एक आधारशिला है। भारत अब केवल भविष्य का इंतजार करने वाला देश नहीं है, भारत अपने भविष्य का निर्माण करने वाला देश है। और जब लक्ष्य विकसित भारत का है तो हर सुधार राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाता है। कराधान व अन्य विधियां संशोधन 2026 भी इसी व्यापक राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्री बहन निर्मला जी को इस दूरदर्शी पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनके इस प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का पूरा होने का एक माइलस्टोन के रूप में देखता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री पी विल्सन, 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. This Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 seeks to amend 3 acts: Amendment to Payment and Settlement Act 2007, Amendment to Income Tax Act 2005. Sir, shall I wait, sir? Honorable Finance Minister
Sir, I'll wait for Honorable Finance Minister, sir. नहीं आप बोलिए ना Honorable Finance Minister is not माननीय here. वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं Yes. नहीं माननीय राज्य मंत्री जी Yes. मौजूद हैं Yes. Madam, I can see you. I can see you. Yes. Amendment to Income Tax Act 2025. And the last one is Amendment to Finance Act 2026. Honorable Vice Chairman, sir, certain provisions are going to really affect the poor people, middle class people, and the common man. The power which the Union government wants to bring by virtue of this amendment under Section 10A of the Payment and Settlement Act 2007 is, it is going to completely collapse the digital payment structure which the country adopted recently. We are making payments through UPI, through GPay, through Paytm. In fact, in all shops like vegetable shops, tea shops, the flower vendor, now they have been adopted to this payment methodology, that is UPI. The government has been spending years together telling the people of India that you should go digital, use your phone, use UPI, do not carry cash. And India has moved towards the digital economy. In fact, even in Parliament canteen, when we go and have a cup of coffee, which they charge only for 10 rupees, I make payments only through UPI. Whereas my friends will be having more than 500 or 600 rupees, they may give it. But what I'm saying is, this type of payment, people have adopted to this type of payment. Now, the vegetable, as I said, the vegetable vendors accepted UPI, tea shop accepts UPI, small hotels accepts UPI, auto driver accepts UPI, and now all of a sudden, when UPI has become a part of Indians, you bring this amendment and now you are going to levy tax for the usage of UPI. Now, what will be the tax which you are going to levy? We do not know. Honorable Finance Minister has to tell this August House that this provision is not going to be used against the common man, the poor man, who is going to use it for a small amounts, this payment of electronic methods, and they should not be unnecessarily charged through this payment. Tomorrow what will happen? All along you brought them through this payment digital methods. Now we are reversing back to the cash methods. They will avoid this digital payments. So therefore, Honorable Finance Minister who has come to this house has to tell that how far they are going to use it against the common man. The next one, no doubt we are not going to oppose against the foreign contribution or foreign investment in India. But the Honorable Finance Minister has to say that how far this foreign investment which you are going to give an exemption to the tax, how it will create jobs to the persons in India, how far they are going to make a value additions, and how far the public money which is going to be given as an exemption is going to be benefited for the people of this country. So to that extent, and how far it will affect the employment also in our country, to that extent the Honorable Finance Minister has to tell us. Now the Honorable Finance Minister has come here. I would only say that Tamil Nadu is contributing about 9% to the national GDP. So our population accounts for about 6% of total population. In fact, for every investment of 1 rupee, we are getting only 26 paise. But what is the problem today Tamil Nadu is facing? Sir, the Karnataka government is going to construct a Meghalaya dam. Sir, in fact, the then Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he wrote a letter on 4th of March 2026 requesting Karnataka government that not to construct the Meghalaya dam and ask for, I'll finish it, sir, I'll finish it. I'm coming in the point of tax only, sir. 30 minutes. Sir, I will conclude, sir, with respect to the tax. Sir, he has written letter and he has asked for a constitution of a tribunal.
Sir, till today, the tribunal has not been constituted. Sir, when Tamil Nadu people are paying taxes to the union government, what is the difficulty in constituting a tribunal, sir? After all, we are asking for a constitution of a tribunal to solve this Meghalaya issues. When this tribunal is constituted... Next speaker, माननीय सदस्य श्री सुभाषिष खुंटिया। सर माइक सर। जय जगन्नाथ। Thank you, Vice Chairman sir, for giving me the opportunity to speak on the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. सर, सरकार ने जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को ऑर्डिनेंस का आधार बताया, लेकिन इसी बिल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डायमंड और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 2040 और 41 तक के लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। यदि आवश्यकता तत्काल थी तो लाभ इतने लॉन्ग टर्म क्यों? क्या ऐसे रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस से नहीं लाया जा सकता था? सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन दिए हैं, क्या आकलन किया गया है कि इनसे कितना इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू फॉरगन होगा और इंडियन इंडस्ट्रीज तथा एमएसएमईज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, क्लॉज 2 के तहत सेक्शन 10A में बदलाव किया गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट मोड पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मोड्स नोटिफाई करेगी। क्या नॉन नोटिफाइड मोड्स पर चार्जेस लगाया जा सकेगा? डाटा सेंटर्स को टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें पानी और बिजली की व्यवहार बहुत अधिक होती है। क्या वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्रों में इनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट का असेसमेंट किया गया है? सर महोदय, मैं उड़ीसा से आता हूं। श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में उड़ीसा ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एमएसएमई प्रमोशन और पॉलिसी स्टेबिलिटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया। उड़ीसा को सरप्लस स्टेट बनाया और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में रैंक 1 हासिल किया। एफआईए मुख्य पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, लेकिन फैक्ट्रीज, एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट स्वतः नहीं बढ़ती। क्या सरकार ने इन इंसेंटिव्स के वास्तविक इंपैक्ट का आकलन किया है? ट्रीटी शॉपिंग और राउंड टिपिंग रोकने के लिए क्या सेफगार्ड्स है? अंत में हर टैक्स इंसेंटिव्स के साथ रेवेन्यू इंपैक्ट स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, इंडिपेंडेंट रिव्यू हो और इंडियन एमएसएमईज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एनवायरमेंट तथा इंडियन इन्वेस्टर्स को समान पॉलिसी सपोर्ट मिले। टैक्स कंसेशन का उद्देश्य केवल फॉरेन कैपिटल लाना नहीं, बल्कि इंडियन इंडस्ट्री और हमारा युवाओं के लिए रोजगार को भी मजबूत करना चाहिए। सर धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। सर बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री एस निरंजन रेड्डी, 2 minutes। Thank you, sir. Sir, my party YSR CP and my leader Jagan Mohan Reddy joins me in supporting this bill wholeheartedly. There are 2 or 3 issues this bill seeks to achieve, sir, so we want to support the government. There's a concern that a lot of members have addressed about the UPI payments and they becoming chargeable. We take comfort that the government has clarified that there will be no UPI burden on the consumers. If steps are taken effectively, that should, I think, harbor any, I'm sorry, sorry, sir, it could take away any such concerns. Sir, I compliment the government that they are having a long-term manufacturing policy with regard to providing that for 40 years they will be having a particular mechanism in place. Sir, I may differ with some of the other members with regard to the requirement of foreign investment in India. India cannot progress without foreign investment. We need to do everything that is necessary for the purpose of bringing in foreign investment. I would therefore urge the government to take further steps, sir, for the purpose of ensuring that any obstacles are removed, because as and when the foreign investors would again start looking at India more positively and aggressively, we should have the rails for ensuring that these investments come in seamlessly. Thank you, sir. नेक्स्ट सदस्य माननीय डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी।
Mike. Thank you, Chair. At the monsoon session, this is my first contribution. At the very outset, I rise to wholeheartedly support the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. जैसे कि चाणक्य ने कहा है कि just as the bee collects honey without hurting the flower, so should a government collect taxes without harming the people. This bill is a modern and very productive legislative expression of that 2000-year-old wisdom. It may look a technical set of amendments, a schedule substituted here and there, a clause omitted, पर असल में ये बिल भारत की फिस्कल आर्किटेक्चर को ग्लोबल बनाने के लिए एक निर्णायक घड़ी है। सभापति महोदय, ये बिल 3 एक्ट्स को टच करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2026। लेकिन इसके पीछे की भावना एक ही है, भारत को दुनिया के इन्वेस्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स, एमएसएमई के लिए ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। वर्षों से हमारी टैक्स पॉलिसी 1961 का जो पुराना बिल और ये जो चोर मचाए शोर, आज तो शांति है, इनके राज्य में लीगल एम्बिग्यूटी, आउटडेटेड क्रॉस रेफरेंसेस, ग्लोबल कैपिटल फंड मैनेजर्स choosing other jurisdictions over India. We have seen Singapore, we have seen Mauritius being used as a preferred. इंडिया का पैसा वहाँ पे बन रहा था, फिर इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए और क्या क्या नहीं किया। अनसर्टनिटी दैट डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो जो 2015 में 2 करोड़ थी, आज 24,162 करोड़ को पार कर गई हैं। डिजिटल पेमेंट्स वैल्यू के मामले में 4,000 गुना से वृद्धि हुई। आज 700 से भी ज़्यादा बैंक और 55 करोड़ से अधिक यूजर यूपीआई तक हैं। गवर्नमेंट को हर नए इस अमेंडमेंट में हर नए डिजिटल पेमेंट मोड को तुरंत मान्यता देने की ये शक्ति देता है ताकि कोई भी अगली क्रांति को कोई भी पुराना कानून रोक ना सके। मैं इसलिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। दूसरा, ये बिल दुनिया के फंड मैनेजर्स को भारत में बुलाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पहले सारा बिजनेस सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई चला जाता था, अब नए शेड्यूल से ये साफ नियम देता है कि भारत से काम करो और बेफिक्र रहो। तीसरा, ये बिल हमारे मैन्युफैक्चरिंग और डायमंड ट्रेडर्स को एक दशक का भरोसा देता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की छूट अब 2040-41 तक और रफ डायमंड्स की सेल जो एक इकोनॉमिक जोन में है उसको 2000 कर पे छूट 2041 तक दी गई है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी 1-2 साल के भरोसे पर अरबों का निवेश नहीं कर सकती। चेयरमैन सर, tax laws alone cannot build an economy, vision does. Over the last 11 years, 12 years, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, India's tax and fiscal architecture have been transformed from an instrument of fear to instrument of growth. यूपीए सरकार के समय भारत की इनकम टैक्स 1961 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। 819 सेक्शन थे, 47 चैप्टर थे, 5,12,000 शब्द थे, 1200 प्रोविजन थे। अब क्या है, खाली 536 सेक्शन हैं। 47 चैप्टर की जगह देयर आर ओनली 23 चैप्टर्स नाउ और शब्दों की संख्या भी आधी हो गई है। द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वॉज कैपिटल। यूपीए सरकार के समय फंड मैनेजर्स भारत आने से डरते थे और सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में फंड मैनेजमेंट बिजनेस का फायदा उठाते रहे। आज मोदी सरकार ने और मैडम निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में गिफ्ट सिटी ही एक देख लीजिए, आईएफएससी में 200 से अधिक फंड मैनेजमेंट एंटिटीज और 300 से अधिक फंड्स रजिस्टर हुए हैं हमारे गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिनका एसेट्स
अंडर मैनेजमेंट $23.5 बिलियन है और उद्योग जगत का अनुमान है कि ये आंकड़ा 2030 तक $100 बिलियन तक जाएगा। दिस इज द फोरसाइटेडनेस एंड लीडरशिप। थर्ड, यूपीए सरकार के दौरान भारत का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन डेट मार्केट में होकर भी वर्षों तक ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में नहीं आया। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में हमारा बॉन्ड नहीं आता था। मोदी सरकार के प्रयासों से जून 2024 में भारत को जेपी मॉर्गन के गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में शामिल किया गया। ये भारत के लिए गर्व की बात है। पहली बार हुआ जिससे भारत में 20 से 25 बिलियन डॉलर के फॉरेन इनफ्लोज आएंगे और महीनों के भीतर ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $20 बिलियन से अधिक निवेश कर दिया, क्योंकि अभी वित्त मंत्री ने एफआईआईज को लेके भी एक बड़ी राहत दी है कि अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में यूपी सरकार के समय मोबाइल फोन भारत के सबसे बड़े इंपोर्ट आइटम्स में से एक था। हर मोबाइल फोन इंपोर्ट होता था। सेमीकंडक्टर जैसी कोर टेक्नोलॉजी में भारत कहीं नजर नहीं आता था। आज पीएलआई स्कीम के कारण मोदी सरकार में मोबाइल फोन प्रोडक्शन 33 गुना बढ़ी है। 18,000 करोड़ से जो है 627 करोड़ तक हो गया। मोबाइल एक्सपोर्ट्स 165 गुना बढ़े, 1500 करोड़। और जो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1,64,000 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट किए। हमारे पंजाब में ही वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मोहाली को 4,500 करोड़ देके सेमीकंडक्टर लैब को मॉडर्नाइज करने का ऐलान किया। वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी को 100 गुना किया। ये अमेंडमेंट बिल मैन्युफैक्चरिंग एग्जम्पशन को 2040-41 तक बढ़ाकर इस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन लाएगा। अंत में जो हमारे भारत दुनिया में 15 में से 14 डायमंड्स को कट करता है और फिर भी रफ डायमंड ट्रेडिंग में हमारा सूरत डायमंड बोर्ड स्पेशल नोटिफाइड एरिया भी टैक्स अनसर्टेनिटी के कारण 60% रफ डायमंड दुबई और अन्य देशों में बाहर की कंपनियों को भेजा जाता था। लेकिन अब फॉरेन माइनिंग कंपनीज को जो स्पेशल नोटिफाइड जोन में रफ डायमंड निकालेंगे, बेचेंगे, उनको भी इस अमेंडमेंट बिल में 2041 तक टैक्स एग्जम्पशन देकर भारत को डायमंड कटिंग पॉलिशिंग हब ही नहीं बल्कि एक सच्चा ग्लोबल ट्रेडिंग हब बनाने का रास्ता खोल दिया गया है। सभापति महोदय, ये टैक्सेशन खाली अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये मोदी सरकार की उस सोच का विस्तार है जो मानती है कि एक सिंपल, प्रेडिक्टेबल, ग्लोबली इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम विकसित भारत की नींव है। 2014 से अगर मैं गिनाने चलूं, समय नहीं है कि कैसे कैसे टैक्स को रिड्यूस किया गया, पर्सनल को, हाउस होल्ड को, लो इनकम ग्रुप्स को, कॉरपोरेट को, सब में बहुत जो है उसको कम किया गया सहूलियत के लिए। जो कानून पहले फियर, क्रिमिनलाइजेशन, लिटिगेशन के प्रतीक थे, आज वही कानून ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट के माध्यम बन गए हैं। जो कैपिटल पहले भारत से बाहर जाता था, वो आज वो भारत में आने का रास्ता खोज रहा है। आज भारत की टैक्स पॉलिसी मजबूत ही तो है, भारत की इकोनॉमी भी मजबूत है। टैक्स पॉलिसी सिंप्लीफाई होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो टुडे वी आर नॉट जस्ट अमेंडिंग दिस historical income tax laws and various benefits inter alia available to our business and industry. We are building the fiscal foundation of Fixed Bharat. Jai Hind. Thank you. धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर एम थम्बे दुरे, 2 minutes. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I support this bill brought by Honorable Finance Minister. Sir, this bill seeks to amend the Payment and Settlement System Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026.
It also seeks to replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026 with the Act of Parliament. The government has stated that these measures are necessary in view of the global economic uncertainty, disruption, international trade and supply chains, and the need to provide great tax certainty, sir. I want to raise one point, sir. Honorable Minister, DMK Minister Honorable Vincent spoke about criticism of this bill and also global investment said. I want to know from Honorable Finance Minister, during the DMK period, Stalin visited, former chief minister visited so many places, global event there. How much money brought for the investment here and benefited Tamil Nadu? Because he is a finance minister, he can explain that, what kind of thing they have done. Because during the DMK period, the whole economy of the Tamil Nadu gone very bad. Nearly 10 lakh crores of loan borrowed crores of rupees, but the economic condition of Tamil Nadu is very bad condition. But he is criticizing certain things. And also same, sir, the aspersions he made, because once he said, because some 5 rupees something is giving for getting coffee, but we are having 500 rupees. What about, he thinks about we are very poor, they are poor people, we are rich people. It's the aspersion of the members of other members. It's a member speaking about criticizing that this system and the digital system. He is telling about that other members having 500 rupees, 600 rupees like that. If you are saying 50 rupees something you are telling, this is the way aspersion is making on the members speak. Said it's a privilege I'm telling. You must not criticize the other members. You may be poor or rich, but how can you criticize other members? You are having so much of money, but he is having giving a small amount. This is the bill. You spoke about that. That is why I'm speaking. How can you criticize person or other members? Members' attitude always like this, sir. Thank you very much. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी, 2 मिनट्स. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया. मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये. मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए. प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे. क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं. और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर. घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी. तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक. दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है. 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, USTR, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं. तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है. इसलिए इस बिल के हम खिलाफ. मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, 1 आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए. मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं. खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए. मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है. अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ
मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, ये बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। माननीय श्रीमती महुआ माझी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री एल.के. सुधीश, नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी, 10 मिनट्स। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में इस सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह विधेयक केवल आयकर कानून में एक तकनीकी संशोधन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, वित्तीय स्थिरता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सशक्त करने वाला एक दूरदर्शी सुधार है। माननीय उपसभापति महोदय, आज पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और पूंजी के तेजी से होने वाले प्रवाह एवं बहिर्गमन का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत को एक मजबूत, स्थिर और भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। यही कार्य यह विधेयक करता है। इस विधेयक के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर 20% विद होल्डिंग टैक्स तथा पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई। इसमें भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की बाधाएं समाप्त होंगी और दीर्घकालिक विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। माननीय महोदय, यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सदन के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 2004 में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत के सरकारी ऋण बाजार में निवेश की सीमा मात्र 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष 2010 तक यह बढ़कर केवल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही पहुंच सकी, लेकिन उस दौरान विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली कर व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत लंबे समय तक वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाया। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में FAR प्रारंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत को JP मॉर्गन, JBI EM इंडेक्स, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स तथा FISE रिजल्ट इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जैसे प्रमुख वैश्विक सूचकांकों को स्थान मिला। अब यह विधेयक भारत के लिए ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल होने की संभावना को भी मजबूत करता है। इससे वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार को नई मजबूती मिलेगी। माननीय महोदय, इस सुधार का एक बड़ा लाभ यह होगा कि रुपया अधिक स्थिर रहेगा। जब दीर्घकालिक विदेशी निवेश बढ़ेगा, तब विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे वैश्विक अस्थिरता के समय रुपये पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। यह विधेयक केवल सरकारी प्रतिभूतियों तक सीमित नहीं है, इसका लाभ देश के उद्योगों और MSME क्षेत्र को भी मिलेगा। जब सरकार को विदेशी निवेश से अधिक पूंजी उपलब्ध होगी, तब घरेलू बचत पर दबाव कम होगा और निजी उद्योगों के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। माननीय महोदय, इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में वैश्विक ESG निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और भारत के हरित विकास अभियान को गति मिलेगी। माननीय महोदय, दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थागत अनुमानों के अनुसार इस सुधार से अगले लगभग 1.5 वर्ष में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का दीर्घकालिक वैश्विक निवेश भारत में आकर्षित हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रहा है।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय में यह विधेयक भारत की वित्तीय संप्रभुता को और अधिक मजबूत करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करती हूँ, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत का वैश्विक निवेश का सबसे विश्वसनीय केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयकर संशोधन विधेयक 2026 का पूर्ण समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान राजीव कुमार, नॉट प्रेजेंट। श्रीमान प्रमोद बोरो, श्रीमान प्रभात मौर्य। थैंक यू सर। सर, इस विधेयक में मेरा कुछ सुझाव है। मेरे पार्टी यूपीपीएल की तरफ से मैं ये बिल को समर्थन करता हूँ। ये वो बिल भारत के एक परिवर्तन लाने वाले बिल है सर। आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में मेरा कुछ ही सुझाव है सर इस बिल में। आई सपोर्ट द डिसीजन टू प्रोवाइड एग्जाम्पशन to foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from taxes on interest as well as capital gain from investment in government securities, which at present is the tax at 20% and 12.5% respectively. However, I would like to urge the government of India to work towards simplifying the complex compliances frameworks faced by such investors from regulators. Sir, दूसरा पॉइंट है सर, easing conditions for foreign cloud service providers. The decisions to remove the condition that only those foreign companies notified by central government providing data center services will be exempted from taxes on income acquiring from procuring such service is a welcome step. Next, sir, I would like to urge the government of India to develop an integrated framework for renewable energy infrastructure with the proposed creation of data centers to account for reduction in carbon emissions in the long term. Sir, my next point is providing tax exemption for key industries. The new bill extends income tax exemption for foreign companies supplying capital goods, tooling and machinery to domestic Indian contract manufacturers, along with extension of exemption until 2040-41 is a welcome step. I would like to urge the government to consider calibrated implementation of such measures, just a second sir, for labor-intensive sectors like textile, handicrafts, tourism, which contribute significantly to the employment. Thank you, sir. Next, Srimati Rekha Sharma. Sir, Mike. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I rise in support of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Today, I do not wish to speak in sections, schedules, or complicated tax terminology. Laws are not only for the lawyers, chartered accountants, or tax experts. They are also for ordinary citizens who work in the offices, run small businesses, make investment, sets up factories, and honestly pays taxes. For me, the most important aspect of this bill is that our government, under the leadership of Prime Minister Modi, does not treat taxation merely a tool for revenue collection. Our tax policy is also economic policy, investment policy, and also employment policy. And ultimately,
It is about common Indian who needs jobs, businesses, opportunities, and system where government is not an obstacle but a facilitator. So I want to make one thing very clear. Our earlier income tax was of 1961, old, redundant, and useless. The decades, the governance and taxation